एजुकेटेड हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम इस प्रकार से 33 पोलिंग स्टेशन ऐसे बना रहे हैं जहाँ एब्सोल्युटली यंग पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग पार्टीज would be there to greet you. So something like what is being shown here. And this is again with our objective of encouraging the youth, telling them that you are not only have to get registered yourself, you have to manage the elections and you have to come and vote also. Friends, in this respect, we like to give you some unique polling stations also. ECI, as you know, has always been working towards this objective of inclusive and accessible elections. For example, there is no polling station or a building in the polling station 69 Alibad at this Bagra assembly constituency. So what has been attempted is to convert and people had to come 80 kilometers to cast their vote to a particular station because they were all carried in a bus to another place. So this time, a shipping container is being used to serve as a polling station. And with all AMF, all assured minimum facilities being provided in this makeshift one, and with 207 voters. Similarly, there are many other examples like where our election machinery is going to last mile to ensure participation. A polling station being set up, which is on the left side, only for one voter. इस पोलिंग स्टेशन में सिर्फ एक ही वोटर है जो वहीं रहना चाहते हैं, बाहर नहीं आना चाहते. उनके लिए हमारी 15 लोगों की टीम जाएगी और एक वोट लेने के लिए. This is the strength of the Indian democracy. Similarly, for polling parties, team has to travel by boat to reach the polling stations in Siabelet Island in Arabian Sea. At the island has no alternative connectivity. Nearest town, Jafrabad, is approximately 15 kilometers away from island, and this has over 832 houses and 4,757 voters, and will go by boat and get the thing. The commission has set up 3 polling stations in Madhopur, Jamalpur, in Gir Somnath district for the Siddhis. There are total 3481 voters, of which 90% are from Siddhi community, and they are descendants of East African people who came to India during 14th and 17th century and resides here, and they are our proud voters. And this is again what the inclusivity in the Indian democracy is about. At the cost of repeating, my friends, I would reiterate, if we, the Election Commission team, put in such concerted effort to ensure a polling station with a 2-kilometer reach for voters, replete with all facilities, तो वोटर्स का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वोट देने के लिए अवश्य आएं. आपके माध्यम से मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं. Now about senior citizens. Commission has also endeavored to bring the polling stations to the doorstep of those voters who face difficulties in coming to the polling stations. This optional facility of postal ballot will be available to all these voters who are 80 plus, PWDs with the benchmark of 40% disability, and if by chance anybody is suffering from COVID. And a polling team comprising of 2 polling officials will go to their houses, which will be videographed, which will be with full security, and under full information and knowledge of the political parties and candidates, with an option to accompany them. We will in advance provide a list of such voters who have opted for casting their vote from the comfort of their home, and will also provide them the route chart by which the polling parties will go to get the votes. And they cannot deviate from that route chart, which is displayed in advance. वोट की सीक्रेसी को अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से हम वोट लेके आएंगे, अगर ऐसा वो अपना ऑप्शन हमें फॉर्म 12D में भरकर देते हैं. And as we always say, whatever we are today, we are because of our senior citizens. And in this phase, in this round, there are 9.89 lakhs senior citizens, senior voters, 80 plus, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर वो भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के अपने जोश और समर्पण से देश के युवाओं के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, और इसीलिए वो युवाओं को भी आगे बढ़ चढ़कर मतदान में
हिस्सा लेना चाहिए. Friends, similarly, Commission is emphasizing on the empowerment and participation of all our persons with disabilities. There are 4.04 lakh PWD voters who shall be given priority for entering polling stations. Provisions would be made for designated parking spaces, and volunteers shall be available. And all this they can book if they want. This will be available on the booth, no doubt. But if they want to book it, they can book it on our PWD app. Any facility, any facilitation which the PWD voters want or 80+ voters want, they can book it at our app. We are also similarly focusing on inclusion of our TGs, the third gender voters. For variety of reasons, their inclusion, either because of various kind of social factors, has not been complete. We are focusing on it. We want them to make every one of them a voter. We have made some of them as our icons also. So any disadvantaged group in the society should deserve the highest possible recognition and respect from all of us. And Commission is very concerned and committed to provide full facilitation, full participation in an inclusive and accessible manner to all our marginalized deprived sections, which includes the 80+ citizens, 100+ citizens, PWDs, transgenders. We are also planning to have an outreach in certain red light areas so that our teams go and with the fullest possible respect and secrecy and whatever is the social milieu, they get the votes made and they also get the awareness activities for the voting. Friends, 2017 की comparison में there is a 100% increase in the number of transgenders in the state of Gujarat. There are 1417 TGs who are now registered. And it's actually a sight to be seen to believe when they come forward. They came forward when we went to Gujarat last time. And the kind of enthusiasm they had in participating and even becoming our icons to convey to the others that you come and vote for us. So we very happily recognize their commitment. And there are now 1417 voters. Just to inform you, there are now 44,904 registered third gender voters in the entire country, and even counting. In this SSR, we'd again do a great, whole lot of effort to make them our voters. Friends, next is about the participation of the citizens. ये पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि सी विजिल के माध्यम से अगर नागरिक अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो उनके फ़ोन से ही उनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रजिस्टर्ड हो जाएगा. सारी शिकायत वहीं आ जाएगी. अगर नहीं करना चाहते हैं तो अगर लिख नहीं सकते तो एक कागज़ पर लिख के फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं. और जो भी शिकायत वो करेंगे उसकी 60 मिनट्स में एक टीम कॉन्स्टिट्यूट होके जाएगी और विदिन 100 मिनट्स उनको उसका रेस्पॉन्स मिलेगा कि आपकी शिकायत सही पाई गई, आंशिक रूप से सही पाई गई या नहीं पाई गई और उस पर ये एक्शन हुआ. तो अगर किसी भी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कोई भी सिटीजन, कोई मनी पावर, कोई मसिल पावर, कोई किसी भी तरीके का दुरुपयोग देखते हैं या किसी पोलिंग पार्टी का दुरुपयोग देखते हैं के द्वारा, तो निश्चित रूप से सी विजिल का यूज़ करें और उस पर कमीशन को खबर करें. सिमिलरली there is a Suvidha portal, there is a PWD app portal. Suvidha portal is for the candidates to get any facility they want to get from the election commission and from the staff. इसमें यह भी सुविधा है कि अगर जैसे उनको उदाहरण स्वरूप ग्राउंड बुक करनी है तो इसमें सुविधा है कि ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की मर्जी पर है. जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगी. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. This is what the digital lock-in on the Suvidha app provides. And we have given specific instructions to everybody कि सबको level playing field मिलनी चाहिए. जो पहले अप्लाई करे उपलब्धता के आधार पर पहले ग्राउंड, पहले फैसिलिटीज़ उन्हीं को मिलनी चाहिए without any discrimination between the political parties.
Similarly, the next important disclosure is about the KYC app. किसी भी नागरिक को, किसी भी वोटर को अपने कैंडिडेट के बारे में कुछ भी जानना है, तो जो एफिडेविट नॉमिनेशन के दिन फाइल करेंगे, उसकी पूरी की पूरी कॉपी, जिसमें उनकी क्रिमिनल डिटेल्स अगर कोई हैं तो, उनके अकाउंट्स की डिटेल, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जिसको हमारी वेबसाइट पर भी है, और वो स्पेसिफिकली KYC, नो योर कस्टमर, नो योर कैंडिडेट। उस नो योर कैंडिडेट में आप उसकी एजुकेशनल कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है, उनका आर्थिक और क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर कोई है तो वो क्या है, सब इस पे उपलब्ध होगा। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर सो दैट वोटर्स कैन टेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। और अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो कैंडिडेट्स को उसको मैंडेटरीली पब्लिश करनी पड़ेगी एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय अखबार में, और सोशल मीडिया पर उनको 3 बार उसकी डिटेल्स पब्लिश करनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी बताना होगा और उसको पब्लिश भी करना होगा कि वो उन्हें क्रिमिनल के अतिरिक्त कोई दूसरा कैंडिडेट क्यों नहीं मिला। दे शुड गिव रीजंस, मेक इट पब्लिक सो दैट वोटर्स नो कि उस क्षेत्र में क्रिमिनल बैकग्राउंड के अलावा कोई भी और कैंडिडेट ढूंढने में पार्टीज को क्यों और किस प्रकार से इतनी कठिनाई हुई, ये जरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको रीजन से, सो दैट वोटर्स जाने कम से कम कि सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ही पार्टी को मिल सके। फॉर great emphasis which we want to give, and just to explain to you on the inducement free voting and expenditure management. There is a zero tolerance which has been conveyed and will be conveyed further, that government machinery has to be absolutely impartial, fair, and provide the level playing field. It's a zero tolerance. This is being conveyed and has been conveyed to all the officials who are involved, be it civil officials, police officers, enforcement agencies. If there is any instance which is found that there is a violation of this by any officials, we'll deal with this very, very sternly. Similarly, expenditure-sensitive constituencies, there are strict instructions to police, excise department, GST departments, coast guards, income tax, EDs, railway protection force, CISF at the railway station. And let me give you the figures, though they are still increasing and counting. In Himachal elections in 2017, total seizure was 9 crores. It has already crossed 28 crores now, including liquor, mining, and drugs and various kind of things. And still there are 10-12 days to go. We are sure this figure will increase, nothing would move. All the borders and everywhere there is a strict vigilance, and Commission is going to meet all the Chief Secretaries and DGs of the neighboring states of Himachal and Gujarat also, so that the borders are absolutely safe. Nothing moves from the part of those borders in terms of where, if the liquor is cheaper in another place, if there is a provision in one particular place and it comes from the neighboring states, absolutely no leniency on that, and officials have been very, very strictly told about this. Similarly, the narcotics control, and in case of Gujarat, there is a long border of the coast, so coast guards have also been directed and advised that they will keep a very strong vigil on any movement of drugs which is happening, unfortunately, spoiling our youth of the country. It's happening in quite a increased fashion because of the various international factors. However, during the elections, the machinery would be extremely conscious that it does not happen. I would briefly cover about the directions given to the district officials and COs about the social media and the fake news. The narratives which get developed, you are all very well aware. At times, उसमें fake news भी हैं, उसमें झूठे एक narratives भी हैं. So, district officials ने सबको social media team अपने यहाँ setup करने के लिए निर्देशित किया गया है.
CO ऑफिस में भी सोशल मीडिया टीम्स रहेंगी. They would keep watch on the fake news which attempt to disturb the peace or swing the thing in one favor or the another. Therefore, whatever strict action is possible under the various sections of IPC, if required, would also be taken. There is also an appeal through you to all the voters. अगर चुनाव के दौरान किसी तरीके की न्यूज़ का प्रचार जो उनको लगता है फेक है, तो कम से कम उसको आगे ना बढ़ाएं. That much discretion और उतना विवेक अपना जरूर पालन करें. Now friends, coming to the schedule. The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. And lastly, as we always say, media is the biggest ally of the Election Commission. तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, निष्पक्ष तरीके से लें. अगर कहीं कोई उनकी समझ से इरेगुलर एक्टिविटी या पार्शियल एक्टिविटी है तो उसको सी विजिल के माध्यम से जरूर हमें खबर करें, एंड वी विल इंश्योर दैट दे गेट द आंसर्स इन 100 मिनट्स. थैंक यू वेरी मच. एक मिनट, हम क्वेश्चंस लेंगे. आप प्लीज पूछने के पहले अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलें. मैं फर्स्ट रो से लेती हूँ क्वेश्चंस. पहले आपने प्रदीप. सर, ये मैं प्रदीप हूँ, टोटल टीवी न्यूज़ से. मैं जानना चाह रहा हूँ सर, जो अनाउंस हुआ है गुजरात का चुनाव और जिस तरीके से सवाल उठे थे कि देरी हुई है, हिमाचल का जब चुनाव अनाउंस आपने किया था, इन बीच कई सवाल उठाए गए, देरी को लेकर सवाल उठाए गए, तो क्या इन आरोपों का आप जवाब देंगे? one or two more. मोहित, आशीष, आप अपना सवाल. सर, मोहित दुबे, न्यूज नेशन से हूँ. सर, लगातार निष्पक्षता को लेकर आप लोग बात करते रहे कि हम फ्री फेयर चुनाव हम लोग करवा रहे हैं. सवाल कांग्रेस ने उठाया है, आपके ऊपर निशाना साधा और कहा है कि आप स्वायत्त संस्था हैं, निष्पक्ष संस्था हैं, लेकिन इमोजी 3 बंदरों की लगा दी है. क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी कांग्रेस के लिए? कोई और सवाल इसी से? सर, यही सवाल था मेरा कि सर इधर आशीष हूँ एबीपी न्यूज से. जो मोहित ने सवाल किया फ्रंट रो पे, सर आपके ऐलान के साथ ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन ने ही जब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आप निष्पक्ष चुनाव इन अदर वर्ड्स नहीं करा रहे हैं, इस पर आपका रिस्पॉन्स जरूर जानना चाहेंगे. बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने दोनों मुझसे पूछे हैं. और अगर निष्पक्षता कमीशन की और इंडिपेंडेंस, इस पर मैं आपको संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया तो ये हमारे ऊपर ही एक डाउट हुआ. तो इससे पहले आपके प्रश्न पे आऊं मैं. जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें there is a tradition of counting it together. There is weather. There is a difference between the date of last term of the assembly, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case, this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में है, उससे 110 दिन पहले है. Still, it is
quite in advance. There is still time. But then it gets constrained by or limited by, or we have to factor in the elections in the other state. Then from counting, 72 days gap between announcement, this is on 8th of December and the 18th of February. Still there is a 72 days gap. So it's a combination of various things which also seriously have in consideration the last date of the term of the House. We are well before that. It is well within the factors of consideration, seeing the polls in the nearby states. Now coming to the larger question which you have asked about the independence, तो actually इसमें actions and outcomes actually speaks louder than words. तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सही हैं कि है नहीं. अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है. Elections after elections since the country has got independent, large number, 14, 15, large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया. हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब हैं, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है. फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है. सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की. जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है, जितने भी रिजल्ट्स हमारे पूर्ववर्तियों ने दिए हैं ये उसी की स्ट्रेंथ है. और आपको एक चीज, आई विश यू वर देयर इन दिस, वी कुड हैव इनवाइटेड यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑन द EMBs a few days back. குஜராத் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதியானது தற்போது டெல்லி ஆகாஷ் பவனில் உள்ள ரங் பவான் ஆடிட்டோரியத்தில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார். டிசம்பர் 1ஆம் தேதி மற்றும் 5ஆம் தேதி என 2 கட்டங்களாக குஜராத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தலானது நடைபெறும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். விவரங்களை வழங்குவதற்காக இணைப்பில் செய்தியாளர் மதியழகன் இருக்கிறார். மதியழகன் வணக்கம். தற்போது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் அவர்கள் குஜராத் மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் எப்போது நடைபெறும், வேட்புமனு தாக்கல் மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை எப்போது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை வெளியிட்டு வருகிறார். இது தொடர்பான விவரம். 188 உறுப்பினர்களை கொண்ட குஜராத் மாநில சட்டப்பேரவையினுடைய பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 18ஆம் தேதியுடன் நிறைவடையக்கூடிய சூழலில் தற்பொழுது குஜராத் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதியானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மொத்தம் 2 கட்டங்களாக இந்த தேர்தலானது நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 4.9 கோடி வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்கினை செலுத்த உள்ளதாகவும் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் தெரிவித்திருக்கிறார். இதன்படி இந்த 2 கட்டங்களாக நடைபெறக்கூடிய தேர்தலுக்கான இந்த வேட்புமனு தாக்கல் என்பது முதல் கட்டத்திற்கு நவம்பர் 14ஆம் தேதியும், 2ஆம் கட்ட தேர்தலுக்கு நவம்பர் 17ஆம் தேதியும் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்குகிறது. இந்த வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை முதல் கட்ட தேர்தலுக்கு நவம்பர் 15ஆம் தேதியும், 2ஆம் கட்ட தேர்தலுக்கு நவம்பர் 18ஆம் தேதியும் வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனையும், வேட்பாளர்கள் தங்களது வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெறுவதற்கு முதல் கட்ட தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய வேட்பாளர்கள் நவம்பர் 17ஆம் தேதி என்றும், 2ஆம் கட்ட தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய வேட்பாளர்கள் நவம்பர் 21ஆம் தேதி என்றும் தங்களது வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெறலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 89 தொகுதிகளுக்கான முதல் கட்ட தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு டிசம்பர் 1ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 93 இடங்களுக்கான 2ஆம் கட்ட வாக்குப்பதிவு டிசம்பர் 5ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாக்கு எண்ணிக்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே நாளில், அதாவது டிசம்பர் 8ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என்று
தலைமை தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குஜராத்தை பொறுத்தவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வரக்கூடிய சூழலில் இந்த முறை 2 மும்முனை போட்டியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பாஜக, ஆம் ஆத்மி, காங்கிரஸ் இடையே மும்முனை போட்டி நிலவக்கூடிய சூழலில் குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேர்தல் தேதி விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து தேர்தலுக்கான அந்த விதிமுறைகள், நடத்தை விதிமுறைகள் அனைத்துமே அமலுக்கு வந்துள்ளதால் மாநில நிர்வாகம் முழுவதும் தேர்தல் ஆணையத்தின் கையில் தற்பொழுது சென்றிருக்கிறது. குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தல் தேதியானது தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் அவர்கள் தற்போது அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறார். குஜராத்தில் 2 கட்டங்களாக தேர்தலானது நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆகிய 2 தேதிகளில் 2 கட்டங்களாக தேர்தலானது நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் வேட்புமனு தாக்கல் எப்போது, தேர்தல் நடத்தப்படும் விதிமுறைகள் என்ன, வாக்கு எண்ணிக்கை, தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது என்னென்ன விஷயங்கள் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும் என்பது பற்றிய பல்வேறு தகவல்களை வெளியிட்டு வருகிறார். தொடர்பான தற்போதைய விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி மதியழகன். सवाल उठे थे कि देरी हुई है, हिमाचल का जब चुनाव अनाउंस आपने किया था, इन बीच कई सवाल उठाए गए, देरी को लेकर सवाल उठाए गए, तो क्या इन आरोपों का आप जवाब देंगे? one or two more. मोहित, आशीष, आप अपना सवाल सर, मोहित दुबे न्यूज नेशन से हूँ। सर, लगातार निष्पक्षता को लेकर आप लोग बात करते रहे कि हम फ्री फेयर चुनाव हम लोग करवा रहे हैं। सवाल कांग्रेस ने उठाया है, आपके ऊपर निशाना साधा और कहा है कि आप स्वायत्त संस्था हैं, निष्पक्ष संस्था हैं, लेकिन इमोजी 3 बंदरों की लगा दी है। क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी कांग्रेस के लिए? कोई और सवाल इसी से? सर, यही सवाल था मेरा कि सर इधर आशीष हूँ एबीपी न्यूज से, जो मोहित ने सवाल किया फ्रंट रो पे। सर, आपके ऐलान के साथ ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन ने ही जब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आप निष्पक्ष चुनाव, इन अदर वर्ड्स, नहीं करा रहे हैं, इस पर आपका रिस्पॉन्स जरूर जानना चाहेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने दोनों मुझसे पूछे हैं, और अगर निष्पक्षता कमीशन की और इंडिपेंडेंस, इस पर मैं आपको संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया तो ये हमारे ऊपर ही एक डाउट हुआ। तो इससे पहले आपके प्रश्न पे आऊं मैं। जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, जिसमें there is a tradition of counting it together, there is weather, there is a difference between the date of last term of the assembly, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case, this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में, उससे 110 दिन पहले है। Still, it is quite in advance. There is still time. But then it gets constrained by or limited by, or we have to factor in the elections in the other state. Then from counting, 72 days gap between announcement, this is on 8th of December, and the 18th of February. Still there is a 72 days gap. So it's a combination of various things which also seriously have in consideration the last date of the term of the House. We are well before that. It is well within the factors of consideration, seeing the polls in the nearby states. Now coming to the larger question which you have asked about the independence, तो एक्चुअली इसमें एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सही हैं कि हैं नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है।
elections after elections since the country has got independent. Large number, 14, 15, large number of assembly elections. Results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया. हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब हैं, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है. फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है. सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूँगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की. जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है, जितने भी रिजल्ट्स हमारे पूर्ववर्तियों ने दिए हैं ये उसी की स्ट्रेंथ है. और आपको एक चीज, आई विश यू वर देयर इन दिस, वी कुड हैव इनवाइटेड यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑन द EMBs a few days back. குஜராத் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதியானது தற்போது டெல்லி ஆகாஷ் பவனில் உள்ள ரங் பவான் ஆடிட்டோரியத்தில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார். டிசம்பர் 1ஆம் தேதி மற்றும் 5ஆம் தேதி என 2 கட்டங்களாக குஜராத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தலானது நடைபெறும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். விவரங்களை வழங்குவதற்காக இணைப்பில் செய்தியாளர் மதியழகன் இருக்கிறார். மதியழகன் வணக்கம். தற்போது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் அவர்கள் குஜராத் மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் எப்போது நடைபெறும், வேட்புமனு தாக்கல் மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை எப்போது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை வெளியிட்டு வருகிறார். இது தொடர்பான விவரம். 188 உறுப்பினர்களை கொண்ட குஜராத் மாநில சட்டப்பேரவையினுடைய பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 18ஆம் தேதியுடன் நிறைவடையக்கூடிய சூழலில் தற்பொழுது குஜராத் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதியானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மொத்தம் 2 கட்டங்களாக இந்த தேர்தலானது நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 4.9 கோடி வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்கினை செலுத்த உள்ளதாகவும் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் தெரிவித்திருக்கிறார். இதன்படி இந்த 2 கட்டங்களாக நடைபெறக்கூடிய தேர்தலுக்கான இந்த வேட்புமனு தாக்கல் என்பது முதல் கட்டத்திற்கு நவம்பர் 14ஆம் தேதியும், 2ஆம் கட்ட தேர்தலுக்கு நவம்பர் 17ஆம் தேதியும் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்குகிறது. இந்த வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை முதல் கட்ட தேர்தலுக்கு நவம்பர் 15ஆம் தேதியும், 2ஆம் கட்ட தேர்தலுக்கு நவம்பர் 18ஆம் தேதியும் வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனையும், வேட்பாளர்கள் தங்களது வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெறுவதற்கு முதல் கட்ட தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய வேட்பாளர்கள் நவம்பர் 17ஆம் தேதி என்றும், 2ஆம் கட்ட தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய வேட்பாளர்கள் நவம்பர் 21ஆம் தேதி என்றும் தங்களது வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெறலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 89 தொகுதிகளுக்கான முதல் கட்ட தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு டிசம்பர் 1ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 93 இடங்களுக்கான 2ஆம் கட்ட வாக்குப்பதிவு டிசம்பர் 5ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாக்கு எண்ணிக்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே நாளில், அதாவது டிசம்பர் 8ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குஜராத்தை பொறுத்தவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வரக்கூடிய சூழலில் இந்த முறை 2 மும்முனை போட்டியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பாஜக, ஆம் ஆத்மி, காங்கிரஸ் இடையே மும்முனை போட்டி நிலவக்கூடிய சூழலில் குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேர்தல் தேதி விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து தேர்தலுக்கான அந்த விதிமுறைகள், நடத்தை விதிமுறைகள் அனைத்துமே அமலுக்கு வந்துள்ளதால் மாநில நிர்வாகம் முழுவதும் தேர்தல் ஆணையத்தின் கையில் தற்பொழுது சென்றிருக்கிறது. குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தல் தேதியானது தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் அவர்கள் தற்போது அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறார். குஜராத்தில் 2 கட்டங்களாக தேர்தலானது நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆகிய 2 தேதிகளில் 2 கட்டங்களாக தேர்தலானது நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் வேட்புமனு தாக்கல் எப்போது, தேர்தல் நடத்தப்படும் விதிமுறைகள் என்ன, வாக்கு எண்ணிக்கை, தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது என்னென்ன விஷயங்கள் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும் என்பது பற்றிய பல்வேறு தகவல்களை வெளியிட்டு வருகிறார். தொடர்பான தற்போதைய விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி மதியழகன். தொடரும் செய்திகளை பார்க்கலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு.
ஹென்கோமேட்டிக் லிக்விட் வித் இன்டெலிஜென்ட். இதோட பயோஸ்டெயின் பவர் கடினமான கரையை நீக்குது. நானோ ஃபைபர் லாக் டெக்னாலஜி இழைகளை லாக் செஞ்சு துணிகளை ஃபேட் ஆகாம காக்குது. புதிய ஹென்கோமேட்டிக் லிக்விட் வெறும் வாஷ் இல்ல, கேர். கரண்டா இங்க போகவே போகாது. இங்கயா கொசுவா? இல்லவே இல்ல. கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா ரொம்ப ஸ்ட்ராங். என்ன சார், சைட் விசிட் பார்க்காதவங்களுக்கு 99 சொல்லும். வீடு வாங்க இல்ல விற்க எக்ஸ்பர்ட்டே கேளுங்க. 99acres.com. There may well be a storm brewing here tonight in many senses. The Football World Cup starts November 20th, live on the Geo Cinema app and Sports 18. வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் தொடர்ந்து தீவிரமாக உள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது. ஓரிடத்தில் அதிக கனமழையும், 7 இடங்களில் மிக கனமழையும், 20 இடங்களில் கனமழையும் பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக சீர்காழியில் 22 சென்டிமீட்டரும், தஞ்சையில் 17 சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது. தற்பொழுது தென் தமிழக பகுதியில் வளிமண்டலத்தில் மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. நவம்பர் 7ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்திற்கு டெல்டா மாவட்டங்கள், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, கடலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, கரூர், நாமக்கல், தென் தமிழக மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யக்கூடும். சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் சில பகுதியில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மீனவர்களுக்கான சிறப்பு எச்சரிக்கை ஏதும் இல்லை. வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் தொடர்ந்து தீவிரமாக உள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது. ஓரிடத்தில் அதிக கனமழையும், 7 இடங்களில் மிக கனமழையும், 20 இடங்களில் கனமழையும் பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக சீர்காழியில் 22 சென்டிமீட்டரும், தஞ்சையில் 17 சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது.